ड्राई डॉकिंग में क्वेश्चन था सर, कल वो देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि व्हेन ट्रिम इज रिड्यूस टू 35 सेंटीमीटर। तो उन्होंने डॉक वाटर हाइट नहीं दे रखी थी, बट उन्होंने बोला ट्रिम रिड्यूस होगी 35 सेंटीमीटर। तो सर उसमें अभी आपने फॉर्मूला में लिखवा रखा था कि चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने आफ्ट में टीसी दे रखा है हमें से, क्योंकि इनिशियल ट्रिम माइनस फाइनल ट्रिम माइनस कर दी, टीसी आ गया। बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आफ्ट है, तो हमने टीए ले लिया, क्योंकि फॉरवर्ड में जो चेंज होगा वो तो चाहिए नहीं हमें, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आफ्ट है। तो सिर्फ हमने आफ्ट वाले का टीसी से टीए कैलकुलेट किया, और जो इक्वेशन है सर वो पी वाली, जिसमें लॉन्ग फॉर्मूला में चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रखा हमने टीए। तो ऐसे ही करना है सर वो। और जो फाइनल कैलकुलेशन में हम सब पी निकालने के बाद जो टीसी टीए टीए दोबारा कैलकुलेट करते थे, वो अब करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टीसी पहले ही दे रखी है उन्होंने, और सिर्फ मीन राइज लगाते हैं। सी इनिशियल ट्रिम दी हुई है, हाँ जी सर। फाइनल ट्रिम इज 35 सेंटीमीटर्स, हाँ जी सर। so TC is known. यस सर। So P is equal to TC centimeters multiplied by MCTC upon LCR. नहीं सर, वो तो वाटर लाइन 3 का फॉर्मूला है सर। इसीलिए मैं अभी वो क्वेश्चन करा नहीं रहा था, अभी अच्छा, आप आगे भाग गए। नहीं वो सर पास पेपर देखा ना, उसमें तो ऐसा। अभी रुक जाओ, अभी शांति रखो, ठंड रखो। ओके सर। अभी मेरे पास बहुत अभी हमारे पास 3 हफ्ते और हैं, जिसमें सर हमें मेरे को लगा ग्राउंडिंग पे चले गए ना, मेरे को सर ड्राई डॉकिंग खत्म हो गई हमारी। नहीं कुछ नहीं, जब मैं हाथ रेज करूंगा, मैं क्लास में अनाउंस करूंगा कि भैया सब कुछ खत्म हो गया है, ड्राई डॉकिंग खत्म हो गई है, ग्राउंडिंग खत्म हो गई है, अब लाओ बाउंसर जो लाना है। तो जब मैं हाथ खड़े करूंगा ना, तभी मतलब समझना कि हम मतलब पानी पूरा पार कर गए हैं। नहीं तो ओके सर। नहीं तो तब तक स्लो चलता रहेगा, स्लो डोज, बिकॉज this is such a vast topic and there are so many permutation combinations attached to it that I could so you can carry on it, you know, it's endless, it's like a bottomless pit, it's a guzzler, so you can just carry on, there's no end to it. So इसलिए अभी I've just done one part of the dry docking, and otherwise मैं अगर वही करता रहूं dry docking, so it will become very monotonous and boring. So in order to create a slight change, I bring in grounding. अब मैं A ship की grounding खत्म कर दूंगा, then I will switch over to hinge ship dry docking. फिर hinge ship की dry docking कर लूंगा, फिर then I will be doing hinge ship grounding. फिर वो खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद इन सब के बाउंसर्स घर पे आ जाएंगे। तो जब वो सब खत्म हो जाएगी, तब ये स्टोरी आपको समझ आएगी कि क्या हो क्या रहा है। तो अभी action shall not be based on scanty information, especially scanty radar information. अभी क्रिटिकल पीरियड चल रहा है, अभी क्रिटिकल पीरियड चल रहा है, अभी स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन चल रही है इस वक्त, समझ नहीं आता जहाज है आगे नहीं है, क्या करना। तो अभी the amount is limited only to that 1 hour that I tell you, बस वो उसकी वो विंडो है। अभी मैंने विंडो खोली नहीं है, तो लॉक गेट्स बंद है आगे के और पीछे के दोनों, और जहाज अंदर है, अब अंदर में डांस कर रहा है ऊपर नीचे, तो अभी यू आर ऑल्सो डांसिंग विद द शिप, दैट इज द स्टोरी राइट नाउ। So critical period is on right now. V-loss of GM is occurring. We just have to make sure कि RGM negative नहीं होना चाहिए. That is all I'm making sure right now. So खाली RGM को positive रख रहा हूँ.
ठीक है, सो अभी ऐसे चलने दो, वी डोंट गो टू द पास पेपर्स एज येट. मैं अनाउंस करूंगा क्लास में, आई विल स्पेसिफिकली टेल यू कि अब आप शुरू हो जाओ, इस चीज के क्वेश्चंस निकालो. तो जब मैं वो बोलूंगा ना आपको, तब आप करना. अभी तो मेरा जो स्टॉक है, मेरा अभी तक वो खत्म ही नहीं हुआ. अभी तो मतलब शुरू ही नहीं हुआ, तो खत्म क्या होगा. अभी तो चल रहा है मेरा स्टॉक, तो चलने दो अभी. ठीक है, इज दैट ओके? सो कल मैंने वो 2 होमवर्क दिए थे, वो हो गए थे? एनी डिफिकल्टी फॉर एनीबडी इन एनी ऑफ दोस 2 क्वेश्चन? हो गए थे, कोई इशू नहीं है किसी क्वेश्चन में. दैट मीन्स कैसा भी मैं टेढ़ा सवाल दे दूं उस चीज में, दैट मीन्स अगर मैं आपको फॉल दे दूं 1.63, फॉल दे दूं 1.73, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट. खाली 1.73 तो फॉल दे इसमें दी. अपने को बेसिकली 3 डिजिट तो निकालना पड़ेगा ना. मतलब जो अपने अपन कैलकुलेट करेंगे वो 3 डिजिट निकालना पड़ेगा डेसिमल के बाद. 3 डिजिट. और उसको थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करना नहीं करने को, क्योंकि उसका आंसर वेरी कर जाएगा थोड़ा बहुत. नहीं, थर्ड डिजिट राउंडेड ऑफ होता है ना हमेशा. अच्छा, ओके. When I say 3 digit, up to 3 decimal places, I'm assuming you are doing rounded off up to 3 decimal places. That's the standard protocol. एक्सक्यूज मी सर. जी. सर ये सेकंड पार्ट था, उसमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट और ये फाइनल डॉक वाटर हाइट सेम ही आ रही 4.8, तो वो सही है मेरा या गलत है? और अगर सही है अगर, तो सर वो उसके बाद क्या होगा? सेकेंड पार्ट में आपकी हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 4.8 आ रही है. ये सर वो हमने लिया था ना पहले, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट वाटर लाइन 3 4.803, एंड देन फाइनल डॉक वाटर हाइट भी 4.8 दिया हुआ है. 4.8 आ रही है. करेक्ट सर. तो यू आर इन विच स्टेज? That means should already test the blocks. And which water line are you on? Critical period is finished. Critical period is finished. 3 is over. Yes. Correct. So for critical period getting finished, is being finished or is finished, and 3 is over, then what is the formula for P to use? Mean rise is equal to P upon TPC. That's right. So it's your P by TPC wala formula which you'll use. So initial hydrostatic draft minus final hydrostatic draft will give you the mean rise. That is 5.062 minus 4.80 will give you the mean rise or the fall. Convert it to centimeter, multiply it by 15, that will give you the P. And 4.8 will be your forward and aft draft also. Any other doubt? Okay. All right. So yesterday I introduced a wee bit of theory of grounding to you. What we did yesterday was that when a vessel gets grounded, then critical period is always on. So we are in a constant state of danger because at the low water time,
we need to calculate our RGM, and that better be positive. Because if it is negative, I'll topple over before the low water time. So I'm in danger then. Then I need to panic because I'm ready to topple over. ठीक है? So also एक चीज और बतानी है ग्राउंडिंग में कि अगर मेरा जहाज ग्राउंडिंग कर गया है किसी रॉक पे, सपोजिंग रॉक इधर है, रेड पेन यहाँ पे ग्राउंडिंग कर गया है, तो एंड आई हैव ग्राउंडेड टू द स्टारबोर्ड ऑफ सेंटर लाइन, तो जब टाइड गिरेगा तो मैं किस साइड पे हील करना शुरू करूंगा? पोर्ट पे तो मैं पोर्ट पे हील करने लगूंगा क्योंकि मैं स्टारबोर्ड से पी मेरा एक्सर्ट कर रहा है एंड मुझे मेरे जहाज को ऊपर पुश कर रहा है. So I will start toppling over to the port side as the low water is falling. मेरी port, and since this is an external force, not an internal force, so it will be a heel. So my port heel will start to increase, and it will keep increasing as the low water falls. So I'm heeling over also, and I'm toppling over also, and my RGM is also coming down. So all these are the compounded dangers of grounding. And simultaneously the piercing might happen, and therefore bilging might occur. And because of all these reasons, my sign off might also happen. So these are all the after effects of grounding. So I need to worry about all these things. ठीक है, चलो जी अब आते हैं. एक मिनट ये जरा साइलेंस कर लेना प्लीज. अब आते हैं हम ग्राउंडिंग के क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल्स पे. All right. So ग्राउंडिंग के ए शेप के जो क्वेश्चंस हैं, सो इसको हम एक नाम दे रहे हैं T1, टाइप 1. So take one question. A vessel of length 140 meters, HF 2 meters forward, KM 6.1, KG 5.5, MCTC 130, W 5,700, forward draft 4.15, half draft 4.85. Grounds on a rock. Grounds on a rock. 10 meters abaft
her stem. 10 meters abaft her stem. The tide then falls. The tide then falls by 0.8 meters. The tide then falls by 0.8 meters. TPC is 16 TPC is 16. सर ये 10 मीटर अबाफ हर stern ये क्या है? Grounds on a rock 10 meters abaft her stem. 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 Grounds on a rock 10 meters abaft her STEM. Stem. TPC is 16. Calculate her VGM and her drafts fore and aft then. Calculate her VGM and her drafts fore and aft then. So let's draw a diagram first to understand this question. This is my waterline. Forward draft 4.15, aft draft 4.85. This is my midship line, H. Center of flotation is 2 meters forward. So this is my center of flotation, 2 meters forward. So therefore, my LCF is how much? 72. 72. So LCF is 72. All right. Grounds on a rock 10 meters above her stem का क्या मतलब होता है? ग्राउंडिंग कहां पे हो रही है? फॉरवर्ड में. फॉरवर्ड में. सो ये रही मेरी पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग. ये 10 मीटर्स अबाउट हर स्टेम है. ये मेरा पॉइंट जी है और देयरफॉर इस पॉइंट के थ्रू मेरा पॉइंट पी, मेरा जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो एक्ट करेगा. सो हाउ मच इज माय लीवर GF? $58. Is everybody okay with that? 70 minus 10 minus 2.
मिडशिप से आगे 70, 70 -10 -2 will be 58. So GF is 58. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. तो अब ये हमारी सिचुएशन है इस वक्त. लॉन्ग फॉर्मूला लिखो. P upon TPC plus P into GF square over MCTC into LBP is equal to fall in waterline in centimeters. So P upon 16 plus P into 58 square over 130 into 140 is equal to how much? 0.8 meters. 80. Is equal 80 to cent. 80 centimeters. 80 centimeters. So is this okay with everybody? Yes, sir. All right. So therefore calculate P. Three 323.448. 323.448. Is everybody okay with this answer? So ये जो fall in water line is equal to fall in tide, वही उसी रेफरेंस से लिया ना हमने ये. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. Fall in water line is equal to fall in tide. So मेरे को P मिल गया है. Can you now calculate V loss and therefore calculate RGM? Point 346 RGM. We lost, sir. Come again. Sir, we lost 0.346, sir. We lost 0.346 and RGM. Sir, 0.254. 0.254. सबका भी सेम है. ओके. अब मेरा एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो हो गया. अब मैं ड्राफ्ट की तरफ आ रहा हूँ. तो ड्राफ्ट की तरफ आ रहा हूँ मतलब ये जो मेरे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं अब मैं इनको देख रहा हूँ. तो ये पहला मेरा कंपोनेंट है मीन राइज. So mean rise is equal to P upon TPC is equal to
मीन राइज कितना है? सर 0.202. ओके, ये सेंटीमीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया तो मीटर में आ गया. ओके, TC is equal to trimming moment upon MCTC. Trimming moment is P into the lever GF upon MCTC. So ये कितना आता है? वन पॉइंट फोर फोर थ्री 144.30. 30. 144.30 सेंटीमीटर. ओके, इसको सेंटीमीटर में रख रहा हूँ अभी. लास्ट में अप्रोक्सीमेट करूंगा. TA is equal to TC into LCF upon LBP. Seventy-four 215 centimeter. सबका सेम है. This will be 144.3 into 72 upon 140. TF is equal to TC minus TA. 70.085. हाँ जी, 70.085, sir. 70.085. okay. So now we make the drafts table. Forward, aft. Initial drafts 4.15, 4.85. Mean rise minus 0.202, 0.220. 0.202. TF/TA. TF का साइन क्या होगा? TF माइनस Negative. PF प्लस. ये माइनस होगा, TA का साइन प्लस होगा. ठीक है, ये P आगे से पुश कर रहा है मेरे जहाज को, तो मेरा बाव ऊपर जा रहा है. सो 0.701, 0.742. So 3.247. 5.39. This is my final draft forward and aft. ये मेरा फाइनल ड्राफ्ट है आगे और पीछे का.
इसका मतलब है मेरी जो फाइनल वाटर लाइन है वो कुछ ऐसी होगी। आगे का मेरा ड्राफ्ट कम हो रहा है, ये मेरी फाइनल वाटर लाइन है। मेरा आगे का ड्राफ्ट 3.247 है और मेरा पीछे का ड्राफ्ट 5.39 है। This is my final water line. हाँ जी, any doubts in this question? No, sir. Clear है? So this question is type 1, T1. ये T1 क्वेश्चन, इसको एक नामकरण कर दिया हमने, so that if you get a question then you can identify. अब T2 लिखो. Now you write down T2. Vessel of length 140 meters. HF 2 meters forward. TPC 16. KM 6.1. kg 5.5. MCTC 130. W 5,700. Sir, question isn't same. देखते जाओ सर, अभी लिख लो, पहले लिख लो। W 5,700. Forward draft 4.15. Aft draft 4.85. Grounds on a rock 10 meters above her stem. ठीक है, यहां तक सर एक बार केजी के बाद दोबारा बोलेंगे। मेरा मैंने जो पिछला क्वेश्चन था अप टू स्टेम तक सेम है, कोई अंतर नहीं किया। सो KM 6.1, KG 5.5, MCTC 130, डिस्प्लेसमेंट 5,700, फॉरवर्ड ड्राफ्ट 4.15, आफ्ट ड्राफ्ट 4.85, ग्राउंड्स ऑन अ रॉक 10 meters above her stem. Same question. Okay, now watch the change. The tide then falls and drafts then are observed to be following: forward 3.247, aft 5.390.
Calculate the following. Number 1. Change in draft at the point of grounding. Sir, at the Point of grounding. Change in draft at the point of grounding. Number 2. Fall in tide. Number 3. Fall in water line. After grounding. Number 4. Rise of tide required for her to refloat. Number 5. To reach. Rise of tide required for her to refloat. Number 5. Upthrust exerted by the rock. Number 6. VGM. All right. अब सर सर ये हाँ जी ये जो मेरा मिस हो गया था सर, एक केजी के बाद मिस हो गया था क्वेश्चन, मेरा नेटवर्क चला गया था। क्वेश्चन इज द सेम. मैंने बोला आपको जो पिछला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन की पहली लाइन वही की वही है जो पुराने क्वेश्चन की थी. और सर जो आपने ग्राउंड्स ऑन अ रॉक 10 मीटर अबाव था फर्स्ट टर्म, उसके बाद जो लाइन बताई थी वो एक बार बता दो सर. हाँ वो बता देता हूँ. ग्राउंड्स ऑन अ रॉक 10 meters above her stem. यहाँ तक पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, कोई अंतर Yes, नहीं sir. है. इज इट ओके? ठीक है, फिर इसके आगे इसके बाद की लाइन. द टाइड देन फॉल्स and drafts then are observed to be forward 3.247, aft 5.390. Calculate the following. अब वो 6 चीजें हैं. ओके गॉट इट सर. तो अब एक बार पहले दोबारा रिपीट करेंगे सर? क्या चीज रिपीट करूं? ये स्टेम के आगे, स्टेम के आगे. The tide then falls and drafts then are observed
to be. ओके सर, बाकी लिख लिया, बस यही लाइन मिस हो गई थी। So अब मोटी क्वेश्चन ये है कि T1 और T2 में अंतर क्या है? सर यहाँ से उल्टा वर्किंग है, हमें टीसी दे रखी है और नहीं, TC एक मिनट, होल्ड इट। अभी कोई डोंट गेट इनटू द मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू डू द क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सबसे पहले तो डिफरेंस क्या है? Sir, final draft we have been given in the question. Correct. For T1 में initial drafts were given, point of grounding was given, fall of tide was given. What you had to find out was final draft, forward and aft, and therefore the VGM. ये T1 की कहानी थी। T2 में क्या कहानी है? Initial drafts given, final drafts given, point of grounding given, fall of tide not given. You have to find. Got it? Yes, sir. यहां पे हम लेते हैं एक ब्रेक। अभी लेट अस स्टॉप एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस क्वेश्चन। और इसके बाद एक फिर T3 भी आएगा जिसमें पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग नॉट गिवन, वो गायब हो जाएगा। ओके, so all these three T1, T2, T3 questions have come in the past papers. You have to identify and then follow the sequence of that. जो भी आएगा इन तीनों में से आएगा, मतलब टाइप 1, 2, 3 में से। बस ये इन्हीं तीनों होंगी, ये 3 वेरिएशंस हैं इसकी। These are the 3 variations. तो इसीलिए मैं क्वेश्चन में डेटा चेंज मैं बदल नहीं रहा हूँ, सेम क्वेश्चन रख रहा हूँ ताकि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि उसका मेथडोलॉजी क्या करनी है। हमने एक बार मेथडोलॉजी समझ आ गई, देन कैसा भी मैं वैल्यूज दे दूँ आपको, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो जो T1 वाला है उसको एक बारी घर में रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, उसकी सीक्वेंसिंग समझ लेना, उसको एक बारी फिर से खुद ही अपने आप ही रेप्लिकेट करके खुद ही सॉल्व करना, उसी को ही, वही क्वेश्चन को। आई डोंट वांट टू गो आगे अभी एज येट, जस्ट फॉलो द पेस। वंस आई एम डन विद हिंशिप, देन यू कैन जस्ट गो ऑन योर ओन पेस, देन आई विल लेट यू ऑफ, देन यू कैन हैंडल इट। ओके Okay, sir. चलो ठीक है, Okay. सी यू। Okay, ओके thank you, sir. बाय। Thank you, sir. सर वो वीडियो मेल नहीं किया अभी तक। हाँ, मैं कल, मेरे को फुर्सत नहीं मिली है, आज करता हूँ। वंदना